Good morning students, welcome back to our online sessions of class 10 science. I hope you and your family will be safe in this pandemic situation. So I requested to all of you unnecessary don't go outside your homes. If any necessary and certain activities are required, then you should go your homes by using a protective mask, using a sanitizers. Always be wash your hands when you are inside your homes. So stay home and stay safe. Now formation of that using, we generally discussing as a part of science, we discussing the different type of chapters like chapter 1 chemical reactions, chapter 2 acid base salt, always, as well as we already discussing like recently chapter number 15, that is our environment. Also we are discussing under the starting of sessions chapter number 6 and chapter number 7 as a perspective of biology. But today we are discussing about the new chapter, that is chapter number 3, metals and non-metals. Now before this discussing, now what do you classify? One is the metals and non-metals. Have you seen around of you, there is a certain objects which are made by the certain elements. Like when you see that, like your doors which in having a certain objects, windows like iron doors, as well as your vehicles, vessels which is used in a part of the kitchens, electronic equipments. So certain things which generally are made by the certain elements. Okay. So how this type of elements, either they may be metals or they may be non-metals. So how we can be classified ki any object is a categories of metal or any object in a form of categories of non-metal, how we can be classified? So there is a general rules for classification of metals and non-metals, in which first of all each and every element have their basic properties that we don't know about ki which type of properties. It may be your physical properties and chemical properties. Each and every element that possesses the special type of properties, it is called part of physical and chemical properties. So as well as each and every element have their unique atomic number. Each and every atoms have their atomic number. That atomic number generally represent how many electrons and how many protons which is available into that particular atoms. Generally protons are the substance which having a positive charge and electron having a substances which have a negative charge, that we already discussing in our previous classes. But the number of proton which is available into the nucleus of atoms, generally it is a part of what? It is a part of the positive substance. Also there is another substance which is called neutron. Neutron is also that substance which is a chargeless, which is also available into the nucleus of atoms. That is also available into the nucleus of atoms. So the number of electrons and number of protons is generally denoted the atomic number. So each and every atoms have their specific electronic configuration. Each and every element, they have possesses specific electronic configuration. Now based on the electronic configuration, how many electrons available on their outer orbit, they generally classified as a part of metals and non-metals. So generally metals are those substances who generally release their electrons, in which the atoms which have their outer orbit electrons number 1, 2, 3. If there is an electron number 1, 2, 3 available into the outer orbit, so they generally have to property the loss the electrons. So they lost the electron always begins the positive charge, and that is called as a metal. But if the element that generally accept the electrons which is having a number of 5, 6, 7. So if the atoms have the number of electron 5, 6, 7 generally accept the electrons, so they always be tendency to accept the electron having the non-metals which having a negative charge. So always be possesses the positive charge is called proton, possesses the negative charge that called electron having a part of the metals or non-metals. So first of all we generally described about the metals, then we move on to the non-metal. First we are discussing about the metals. What do we mean by the metals? Now totally if we seen that in your textbook, I think so 114 elements that should be given discovered till by the scientists today, but that should be increased. Now 119 will be there. So that is the total number of elements that should be discovered by the scientists till today by using a different type of the laboratory schemes, or maybe some of that should be available into the free state. So this type of elements which is discovered by the scientists in the till today, all this type of the elements which is classified into the metals, non-metals as well as metalloids which is called as the semi-metals, इसमें उसको हम classified करते हैं. तो most ofly the elements which is classified into the metals
non-metals and the semi-metals, which is also known as the metalloids. So if most of these elements are generally in a form of metal, most of having a tendency to lose the electrons and check a positive charge. The most of the elements are generally as a part of the metals. These all are the metals or non-metals or semi-metals. They differ from one another from their basic individual property. Now there is more than one metals available into the forms of universe. So these are the metals that can be differed to each other by their physical and chemical property, because each and every element which is in a part of metal ho ya non-metal ho ya semi-metal ho, they possesses the specific kind of the individual their physical and chemical property. So by that they generally having a individually differ from each and every metals. Metals are generally used by the different activities on the basis of their properties. Metals having a different properties. So basis on the properties of metals, they generally use into the different type of perspectives, like aluminium. Aluminium is a very light metal. If you seen that, aluminium is what? It is a very light metal. So a thin and strong foil that should be used to preserve the food that cannot be spoiled by the moistures which is available into the atmosphere. So a thin foil like a paper that can be making by using of the aluminium. So aluminium is a very thin and light metal. As well as we discussing about like different type of metals, we generally discussing about the uses of their basis of their property, in which first we discussing about the aluminium. So aluminium is what? It is a light metal. It is a part of the alloys which does not get corroded. कभी भी उस पर corrosion या इस तरह का rusting process देखने को नहीं मिलते हैं. So aluminium is that kind of substance which cannot be corroded. Hence aluminium metal is mostly used to packing the food materials and the food particles, as well as filling the vessels and the cold drinks, as well as the cold drinks और vessels की preparation में भी हम aluminium का use करते हैं. So that is the basic properties of aluminium. Then it is another metal that is called copper. Copper is used to preparation of wires. If you seen that the wire which can be preparing by the using of the metals of copper, because copper is having a higher conductivity of the electricity. It can be generally conduct the electricity very well good, and it is called as a dilute and good conductor of the electricity. So most ofly copper is used to preparing of wire. तो दो हो गए, aluminium क्या है, copper क्या है. Then we discussing about the gold, silver and platinum. Gold, silver and platinum, which is also a part of the metals, which generally used to preparing of the ornaments, specific formation of, they have to high lusters and they most of used to preparation of the ornaments. Ornaments की बनावट में हम gold, silver और platinums का use करते हैं. Mercury. Mercury is that metals which is generally available into the liquid form. Mercury जो है वो हमें liquid form के अंदर देखने को मिलता है. तो mercury is a liquid form which is generally used into the thermometers. We generally use to check the temperature of our body. तो वो थर्मोमीटर्स में हम मर्क्यूरी का यूज़ करते हैं. उसके अंदर जो हमें दिखता है मेटालिक सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एज अ मर्क्यूरी. एक और मेटल जिसको कहते हैं लेड. लेड इज दैट काइंड ऑफ मेटल विच यूजिंग द प्रिपरेशन ऑफ पाइप्स विच जनरली यूज टू फ्लो ऑफ वाटर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ रेडिएशंस. जो हार्मफुल रेडिएक्टर्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसके जो लेड चैम्बर्स होते हैं, वो जो चैम्बर्स बनते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को लेड के होते हैं, जो इस तरह के रेडिएशंस को प्रिवेंट करते हैं और उसका यूज़ किया जाता है. प्योर फॉर्म ऑफ मेटल्स, प्योर फॉर्म के अंदर जो मेटल्स मिलते हैं, इसमें गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, मर्क्यूरी है, लेड है, ये सारे सब्सटेंसेस हमें प्योर फॉर्म में मिलते हैं और जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, ग्रेटर प्रोपोर्शन में करते हैं. वी आर मोस्टली यूज दिस काइंड ऑफ द सब्सटेंसेस. बट if you seen that another kind of the metallic substances, जैसे certain things which should be used to preparation of the like steel, stainless steels as well as the brass, these all are the part of the alloys, जिसमें एक या एक से ज़्यादा substances को हम use करके mix करते हैं. So if you seen that in our daily basis we generally use the most of the things in our daily life which is generally prepared by the metals or non-metallic substances, or maybe it should be made by the alloys. So that is a general description about the metals. Okay, that we discussing. Now next is what? It is a scientific reason why Earth is called as a treasurer of elements. It is a scientific question which is asked in a 2 marks. Ki write a short note why Earth is considered as a treasurer of elements. क्यों हम उसको treasurer of elements कहते हैं? Treasurer मतलब उसको संभाल के रखने वाला, जिसको हम कहते हैं treasurer. खजांची इसको सिंपल फॉर्म में हम कहते हैं.
So different type of elements or non-elements of metals or non-metals, that is part of the elements. Metal है non-metal है, दोनों को हम elements ही कहते हैं. So different kind of elements that can be obtained from directly to the earth, directly or indirectly, we can be obtained from the earth. So different kind of the elements we generally obtain directly or indirectly from the earth, जिसमें अर्थ का जो स्फीयर है वो अलग अलग फॉर्म में डिवाइडेड होता है, जिसमें लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है और एक एटमॉस्फेयर है. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. सो डिफरेंट काइंड ऑफ द स्फीयर विच प्रोवाइड द डिफरेंट काइंड ऑफ द एलिमेंट्स, एंड विच एलिमेंट्स आर मोस्टली यूज्ड इन अवर डेली लाइफ, एंड विच इज वेरी मच यूजफुल टू प्रिपेयरिंग द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बाय बेसिक ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. तो फर्स्ट वी डिस्कसिंग अबाउट द लिथोस्फीयर. Lithosphere is generally a part of the earth is formed by the sand, clay as well as the stone. So lithosphere is that part of the earth which generally made by the sand, clay and stone. इसका बना हुआ रहता है lithosphere. Like which type of metals that we get from the like lithosphere? Mostly like aluminum, copper, iron, calcium, sodium, magnesium, etc. are the substances are mostly we get from the lithosphere. These are the part of the elements. Next is called atmosphere. Atmosphere means cover the gases of layer around the earth. अर्थ के आसपास जो gases layer होता है उसको हम atmosphere कहते हैं. And in that different type of mixtures of gases like nitrogen, carbon, hydrogen, oxygen, argon, neon. This type of the gases which is available into the form of atmosphere, which is directly used as a part of elements. So that is provided by the earth also. Next is called hydrosphere. Hydrosphere means the part of the earth which generally covered by the water of seas, rivers, ocean, lakes, ponds, the polar regions, which all are the included with the part of the hydrosphere. Now which of the metal elements which we get from the hydrosphere? Mostly non-metals. Non-metals like chlorine, fluorine, sodium, potassium and magnesium, calcium. This type of the substances mostly we get from the hydrosphere. So hydrosphere providing the different kind of the elements, lithosphere is also provide the different kind of elements, as well as atmosphere is provide the different kind of elements. So various type of metals that we directly get it from the earth or indirectly get it from the earth. So it generally store all this type of elements in the various aspects from the earth. So various metals which is available into the proportion of earth's crust in a very larger quantity. Some of the metallic forms this element having available into the crust of earth in a very larger form, larger proportion में available होता है. So उसके according to हम उसको दो state में divided करते हैं. एक होता है free state और दूसरा होता है combined state. Most of the elements which is available into the crust, earth of crust, which divided into two main segment. One is called the free state और एक को हम कहते हैं combined state. दो main state में divided होते हैं. तो what do you mean by the free state and what do you mean by the combined state? Free state और combined state हम किसको कहते हैं? तो metals whose activity is very less, जैसे आगे हम पढ़ रहे थे जो एक्टिविटी सीरीज के अंदर हायर एक्टिविटी ऑफ मेटलिक्स, लोअर एक्टिविटी ऑफ मेटलिक्स और मिडल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स. सो द मेटल्स विच रिएक्टिविटी इज वेरी लेस आर अवेलेबल इन अ फ्री फॉर्म, एंड दैट कैन बी जनरली एवर कॉल्ड एज अ नोबल part of the metals. So the metals whose reactivity is very less, their use of proportion is very high. So this type of metals are generally available in a free state in a part of the crust of earth. These are called as a noble metals like gold, silver and platinum. These are called as a noble metals which is in a very low reactivity and used in a very higher form. Second is called combined state. Now the metals which having the more reactivity and using in a very less proportions, which is called as a what? It is called as a combined state. उसको हम combined state कहते हैं, जिसमें पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, आयरन है, जिंक है. These are called as a combined state. हमेशा combined form में मिलते हैं. So this type of the inorganic elements in which the compounds which are available into the naturally into the earth of crust. So that's why earth is called as a treasurer of elements. इसीलिए हम earth को treasurer of elements कहते हैं. उसमें एक और वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं ore, O-R-E. एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं ore. What do you mean by the ore? ore का मतलब क्या होता है? जनरली हम देखते हैं कि कोई भी सब्सटेंसेस को बाइफरगेटेड करते हैं, तो बाइफरगेटेड के फॉर्मेशंस में मेटालिक सब्सटेंस जो हम अर्थ के क्रस्ट में से निकालते हैं बड़े बड़े रॉक्स के फॉर्म में होते हैं. सो इन अ प्रोपोर्शन ऑफ द सर्टेन मेटल्स इज मोर. कुछ मेटल्स की प्रोपोर्शन काफ़ी ज़्यादा है
और उसका एक्सट्रैक्शन करने से इट शुड बी एडवांटेजेस जो हमें अलग अलग फॉर्म में हम उसका यूज़ कर सकते हैं. द मेटल्स विच इज़ अवेलेबल इन टू द लार्जर प्रोपोर्शन विच जनरली डिग आउट फ्रॉम द अर्थ के अंदर से हम उसको निकालते हैं. एंड दैट टाइप ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल इज अवेलेबल इन टू द पार्ट ऑफ द रॉक्स. बड़े बड़े रॉक्स के फॉर्म में होते हैं. एंड दैट रॉक्स जनरली कंटेन द डिफरेंट काइंड ऑफ द इम्प्योरिटीज़. वो इम्प्योरिटीज़ को कंटेन करते हैं क्योंकि वो फ्री फॉर्म में प्योर मेटल तो है नहीं. सो दे जनरली कंटेन द इम्प्योरिटीज़. तो अगर हमें उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम बड़े बड़े रॉक्स का तो यूज़ नहीं कर सकते हैं. सो बाय यूजिंग द स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ मशीनरी वी कन्वर्ट दैट एंटायर स्टोन इनटू द फॉर्म ऑफ पाउडर. तो पाउडर के फॉर्म में जो आप उसको कन्वर्टेड करते हो तो इसको कहते हैं मिनरल्स का जो फॉर्म होता है पाउडर का उसको कहते हैं ओर, ORE. ओके, सो दैट इज जनरली कॉल्ड एज अ ओर ऑफ द मिनरल्स. सो इन ओर्स लाइक इम्प्योरिटीज़ लाइक जैसे हम देखते हैं उसमें अलग अलग तरीके के मेटल्स होते हैं, क्लेज होते हैं, सैंड्स होते हैं, सिलिका होती है, ऐसे अलग अलग तरीके के इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर होते हैं. उसके अलावा ऑक्साइड होता है, कार्बोनेट होता है, सल्फाइड होता है. ऐसे अलग अलग तरीके के जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो मेटल के साथ जुड़ी हुई रहती है. सो ओर्स जनरली क्लासिफाइड इनटू द कॉमन फॉर्मेशंस जिसमें ऑक्साइड, फॉस्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट फॉर्म्स जुड़े हुए रहते हैं, जिसको अलग अलग टेक्निक से आप क्या करते हो उस तरह के जो इम्प्योरिटीज़ होती है उस इम्प्योरिटीज़ को आप रिमूव करते हो और उसको प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हो. तो दैट इज कॉल्ड एज अ पाउडरिंग ऑफ ओर. उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है उसको हम कहते हैं मेट्रोलॉजी. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. इसमें एक साइंस की एक स्पेसिफिक ब्रांच होती है जो मेटल्स के साथ डील करती है इस तरह के एलिमेंट्स के साथ, उसका मेट्रोलॉजी प्रोसेस कहते हैं. दैट इज जनरली कॉल्ड एज अ मेट्रोलॉजी प्रोसेस. सो व्हाट डू यू मीन बाय द मेट्रोलॉजी प्रोसेस? मेट्रोलॉजी मीन्स व्हाट? जनरली द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का एक्सट्रैक्शन आप करते हैं. द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स एंड प्योरीफाई दैट मेटल्स लाइक इम्प्योरिटीज़ में से उसको प्योर करते हैं. तो प्योरीफाइंग ऑफ मेटल्स दैट इज पार्ट ऑफ द रिफाइनिंग ऑफ मेटल. तो इस प्रोसेस को आप कहते हो मेट्रोलॉजी प्रोसेस. द प्रोसेस इन विच वी सेपरेट द मेटल्स एंड रिमूविंग द इम्प्योरिटीज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मेटल एंड रिफाइनिंग इनटू द प्योर मेटल, दैट एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ मेट्रोलॉजी प्रोसेस. उसका मेट्रोलॉजी प्रोसेस कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ मेट्रोलॉजी विच जनरली इंक्लूड द पाउडरिंग ऑफ ओर ऑफ मेटल. उसके पाउडरिंग ऑफ ओर के होते हैं. उसके बाद अलग अलग 5 स्टेप्स होते हैं. देर आर जनरली 5 स्टेप्स विच जनरली कन्वर्ट इनटू द रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जिसमें पाउडरिंग ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग, रिडक्शन एंड द रिफाइनिंग ऑफ मेटल. ये 5 अलग अलग तरीके के प्रोसेस होते हैं जिसको मेट्रोलॉजी प्रोसेस में कंसिडर करते हैं. पहला कहते हैं पाउडरिंग ऑफ एन ओर. व्हाट डू यू मीन बाय द पाउडरिंग ऑफ एन ओर? जनरली द ओर्स ऑफ द मेटल्स विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ अर्थ, it available into the very minerals having a very large form and generally having impurities like clay, sand, silica as well as the different kind of the minerals. So that entire rocks are present in a form of impurities, so which the bigger pieces of that impurities that converted into the smaller piece like a powdering form by using the specific techniques of the machinery. तो वो जो converted होता है big piece of rocks of stone को, उसको हम पाउडरिंग ऑफ ओर कहते हैं. छोटे छोटे फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड पाउडरिंग ऑफ ओर. तो बड़े बड़े रॉक्स को एक छोटे छोटे पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड पाउडरिंग ऑफ ओर फॉर पर्टिकुलर इम्प्योरिटीज. नेक्स्ट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर. कंसंट्रेशन मतलब क्या? द ओर्स विच आर कंसंट्रेटेड ऑन द बेसिस टाइप्स ऑफ देयर इम्प्योरिटीज हैव दैट परसेंटेज. Which type of impurities and how much percentage of impurities available on the particular ores, according to that we have to make the concentration. Concentration of ore generally इसमें 2 तरीके के प्रोसेस होते हैं. एक होता है फोर्थ फ्लोटेशन और एक होता है मैग्नेटिक सेपरेटेशन, और एक और आता है जिसको हम सेंट्रीफिकेशन कहते हैं. 3 तरीके के प्रोसेस होते हैं, सेंट्रीफिकेशन, फोर्थ फ्लोटेशन और मैग्नेटिक सेपरेटेशन. तो अकॉर्डिंग टू द विच टाइप ऑफ impurities and how much percentage of impurities available to the ores, according to that we have to be separate that impurities by using the 3 different methods. One is called magnetic separations, one is called centrifugation, एक होता है fourth flotation. इन 3 तरीके से हम इस तरह के impurities को remove करते हैं, that is called concentration of ores. Third is called roasting, calcination and smelting. Now generally the impurities which is available into the oxide form, sulfide form और carbonate के form में होते हैं. तो ये क्या करता है कि roasting, calcination, smelting, generally this method are used to conversion of the concentrated ore into the metal oxide. तो मेटल को मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो जनरली वी यूज दिस टाइप ऑफ टेक्निक जिसमें रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और स्मेल्टिंग होता है. नेक्स्ट इज कॉल्ड रिडक्शन.
Reduction is generally carried out by the metals from the metal oxide. तो मेटल ऑक्साइड में से अगर हमें मेटल को ऑब्टेन करना है तो उसके लिए हम रिडक्शन मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें मेटल ऑक्साइड को मेटल में या कार्बोनेट ऑक्साइड को कन्वर्टेड करते हैं, जिसमें कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड को एज अ पार्ट ऑफ द एजेंट्स हम उसमें यूज़ करते हैं. नेक्स्ट जो है वो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल. नाउ रिफाइनिंग ऑफ मेटल जो था मेटल दैट कैन बी कैरिड आउट बाय द रिडक्शन मेथड which generally not in a pure form. It generally contain 0.1% of impurities. But if you want to convert that impurities from the metal and convert into a pure form, we generally use the refining of metal. तो very small process of refining of metal जिसमें दो तरीके के मेथड आते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइसिस और एक जोन रिफाइनिंग. इन दो तरीकों से हम मेटल्स को रिफाइन कर सकते हैं. सो क्लियर? तो what we studied today about the metals, how the metals and non-metal will be classified. What are the general discussion about the metals that we'll be discussing into the right information about the metals. Then why are these called as a treasurer of elements. Then we're discussing what is called ore, how the metrology process that can be implemented, and which are the 5 topics of the metrology that we're discussing into the very small form of definition. So I hope for the today's lecture that should be comfortable and which is suitable for you and easily understood by each and every students. So I hope when we meet next time tomorrow, we'll discussing more detail about what is called powdering of ore, concentration, reduction as the topics like fourth flotation, zone refining, electrolysis in detail. So students, keep revising, keep studying and keep updating your knowledge by using that formation in your right from home. So I requested once, stay home, stay safe, and using that formation of digital education, increase your knowledge as a part of the different ideas. Okay, so we'll meet tomorrow with the next time. Students, take care and bye.